हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है मॉड्यूलर अरिथमेटिक, तो इसके अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। तो हमें बेसिक पता है कि इंटीजर किसे कहते हैं और सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। हियर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैज ए लीस्ट एलिमेंट। दैट मीन्स अगर हम कोई भी सबसेट ले पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। Simply, if S is the subset of Z plus, which is positive integer set, and S is non-empty, then there exists a integer M, such that M less than equal to S for all S belongs to S. For example, हम positive integer का कोई भी subset लेते हैं, for example 2, 3, 4, then यहाँ पर एक least positive integer exist करेगा, तो यहाँ पर 2 होगा least positive integer. Next जो है division algorithm. इसे आपने 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट फॉर एनी इंटीजर a and b with b greater than 0, then there exists a unique integer q and r such that a equal to b cube plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b, where q is quotient and r is remainder. तो इसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ये जो रूल होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. For example, if we divide 17 by 5, then we get 17 equal to 5 into 3 plus 2. Here 3 is quotient and 2 is remainder. Next जो है congruence modulo. Let n be a fixed positive integer and two integer a and b are said to be congruent modulo n if n divides difference a minus b. Symbolically, we written as a congruence b mod n if n divides a minus b. That means we can write a minus b as k into m, where k is any integer. And from here we can write a equal to k into n plus b. That means here b is the remainder when we divide a by n. For example, 7 mod 2 equal to, simply divide 7 by 2, then the remainder will be 2 3s are 6, then it's 1. से हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 congruence to 1 mod 2, and here 2 divides 7 minus 1, which is 6. Similarly, 17 mod 3 equal to 3 5s are 15, तो remainder will be 2. That means इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 17 congruence to 2 mod 3. Here 3 divides 17 minus 2. Next जो है addition and multiplication in modulo n. Here addition modulo n is a plus b mod n equal to a mod n plus b mod n mod n. Similarly, multiplication modulo n is a into b mod n equal to a mod n into b mod n mod n. For example, if we find 11 plus 12 mod 5, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 mod 5 plus 12 mod 5 mod 5. 11 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, प्लस 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5, 3 और 5. अगर 3 को हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 0 0 और रिमाइंडर होते हैं 3. देन इसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम देखते हैं. थ्योरम नंबर 1, फॉर आर्बिट्ररी इंटीजर a and b, a congruence to b mod n if and only if a and b gives the same non-negative remainder with divided by n. Means कोई भी arbitrary integer a and b को अगर हम n से डिवाइड करेंगे और इन दोनों का रिमाइंडर अगर सेम होगा तो a and b congruence modulo n होगा. Since it's a if and only condition, conversely अगर a congruence to b mod n होगा, a and b का जो n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा ये दोनों सेम होगा. Let a congruence to p mod n, that means n divides a minus b, we can write a minus b equal to kn. That implies a equal to b plus k into n.
It is denoted as equation 1 by division algorithm. If we divide b by n, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b equal to q into n plus r, where q is quotient and r is remainder. Putting this value of b in equation 1, we get a equal to qn plus r plus k into n. Simplifying this, we get q plus k into n plus r. That means अगर हम a को भी n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशेंट आएगा q प्लस k एंड रिमाइंडर आएगा r. तो यहाँ पर b एंड k को, इन दोनों को अगर हम n से डिवाइड करेंगे, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा. कॉन्वर्सली बाय डिविजन एल्गोरिथम, अगर हम a को n से डिवाइड करते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू q1 इंटू n प्लस r एंड b इक्वल टू q2 इंटू n प्लस r. यहाँ पर a एंड b का रिमाइंडर हम सेम ले लिए, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड n. यहाँ पर अगर a से b को सब्स्टिट्यूट कर ले, a माइनस b इक्वल टू q1n प्लस r माइनस q2n प्लस r. तो यहाँ पर r कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा q1 माइनस q2 into n. That implies n divides a minus b. Since n divide a minus b, that implies a congruence to b mod n. Next way, theorem number 2. Let n greater than 0 be a fixed integer. For all integer a, b, c, d, the following holds. First is a congruence to a mod n, which is reflexive property. And second is if a congruence to b mod n, that implies b congruence to a mod n, which is symmetric property. And next is if a congruence to c mod n and b congruence to d mod n, then addition or subtraction also congruence to mod n. That means a plus or minus b congruence to c plus or minus d mod n. Or multiplication also congruence to mod n. A into b congruence to c into d mod n. Next, if a congruence to b mod n and b congruence to c mod n, that implies a congruence to c mod n, which is transitive properties. यहाँ पर congruence मॉड्यूलस जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज इफ a congruence to b mod n, that implies a plus b congruence to b plus c mod n and a into c congruence to b into c mod n. And next is if a congruence to b mod n, that implies a to the power k congruence to b to the power k mod n. Number a congruence to a mod n. Here a minus a equal to 0. We can write it as 0 into n. That implies n divides a minus a. Similarly for b, if a congruence to b mod n, that implies n divides a minus b. That implies a minus b equal to k into n. That implies if we multiply minus in both sides, then we get e minus a equal to minus k n, where minus k is the quotient. This implies n also divides b minus n. That implies b congruence to a mod n. Similarly for c, if a congruence to c mod n, a minus c equal to k1 into n, b congruence to d mod n, that implies b minus d equal to k to m. At these two equations, we get a plus b minus c plus d equal to k1 plus k2 into n. That implies n divides a plus b minus c plus d. Then we can write it as a plus b congruence to c plus d mod n. Similarly, you can prove all these points. Next, so theorem 3. If ca congruence to cb mod n, then a congruence to p mod n divided by d, where d is the GCD of c and n. तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं. तो हमें प्रूव करना है अगर ca and cb congruence modulo n होगा, then a and b congruence modulo n by d होगा, where d is the greatest common divisor of c and n. तो यहाँ पर हमें given है ca congruence to cb mod n. We can write it as ca minus cb equal to c whole into a minus b. Since it's divisible by n, then we can write it as
k into n. D equal to GCD of C and n. Since D is the greatest common factor of C and n, we can write C as D into Q and n as D into S. Since D is the greatest common factor, then Q and S are relatively co-prime. Relatively co-prime means GCD of Q and S equal to 1. From this equation, if we put value of C and N, we get dq into A minus B equal to K into D into S. तो यहाँ पर D cancel out हो जाएगा. That implies Q into A minus B equal to K into S. तो यहाँ पर देखो S डिवाइड कर रहा है इस टर्म को Q into A minus B. एंड यहाँ पर S एंड Q जो है रिलेटिवली को प्राइम है. दैट मीन्स S Q को डिवाइड नहीं कर पाएगा. देन ओनली A माइनस B को S डिवाइड कर पाएगा. दैट सिंप्लाइज S डिवाइड्स A माइनस B. दैट सिंप्लाइज वी कैन राइट इट एज A congruence to B mod S. दैट सिंप्लाइज A congruence to B. तो यहाँ पर N इक्वल टू D इंटू S. तो यहाँ पर S फॉर्म लिख सकते हैं N बाई D. तो ये हो जाएगा मॉड N बाई D. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1. सो दैट 89 डिवाइड्स 2 to the power 44 minus 1. दैट मीन्स 2 to the power 44 इज कॉन्ग्रुएंस टू what mod 89. A की जगह पर 2 to the power 44 करना पड़ेगा और B की जगह पर 1 करना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पर हम 2 to the power 8 ले ले which is equal to 256. 6 को 89 से डिवाइड करेंगे. 89 3 167 11. तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा -11. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 8 कॉन्ग्रुएंस टू -11 और 89. पर हम 2 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to the power 8 के साथ. तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू 2 to the power 3 -11 mod 89 by theorem 2. That implies 2 to the power 11 congruence to here 2 to the power 3 is 8. 8 into -11 is -88 mod 89. अगर हम -88 को डिवाइड करेंगे 89 के साथ तो ये हो जाएगा 89 -1 -89. इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1. ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 89. That implies 2 to the power 11 congruence to 1 mod 89. 2 to the power 11 का पावर अगर 4 कर लेंगे जाएगा 2 to the power 11 का पावर 4. तो यहाँ पर t का भी पावर 4 हो जाएगा. बाय थ्योरम 2 हो जाएगा 1 to the power 4 mod 89. 2 to the power 44 congruence to 1 to the power 4 जो है 1 mod 89. So by definition of congruence modulo we can write it as 89 divides 2 to the power 44 minus 1. Next जो है solution of a congruence. An expression of the form ax congruence to p mod n, where a not congruence to 0 mod n is called a linear congruence modulo n. And here an integer x equal to x naught is called a solution if n divides a x naught minus b. Next, theorem 4. If x naught satisfy ax congruence to b mod n, that means x naught is the solution of this linear congruence. Then x equal to x naught plus kn is also a solution of this linear congruence. तो इसे prove करते हैं. Since x naught is the solution of this linear congruence, that means n divides ax naught minus b. Also n divides k into n into n since n is here. That implies n also divides the addition of ax naught minus b plus k into n. That implies simplifying this we get n divides is a into x naught plus k into n minus b. This is also the solution of this linear congruence. Next so existence of solution. A linear congruence ax congruence to b mod n as the solution if and only if GCD of a and n divides b. ये a और n का जो GCD होगा ये अगर b को डिवाइड करेगा ये जो linear congruence का solution एग्जिस्ट करेगा. And if GCD of a and n is 1 then 1
देन 1b को डिवाइड करेगा एंड ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा. If GCD of A and N is D, which is greater than 1, and D divides D, then the congruence has exactly D distinct solution. And here D distinct solutions are x0 plus 1 into K by T, x0 plus 2 N by T, up to x0 plus T minus 1 into N by T. And if GCD does not divide B, then the congruence has no solution. इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन whether the congruence has solution. Question number 1, 2x congruence to 3 mod 4. Here A equal to 2 and B equal to 3 and N equal to 4. And here GCD of A and N equal to GCD of 2 and 4 does not divide 3. Classifies this congruence has no solution. Next, question number 2. 3x congruence to 2 mod 4. Here A is 3, B equal to 2 and N equal to 4. And here GCD of A and N is 1 solution. Then the congruence has unique solution. Next, so problem number 2. Solve the congruence 4x congruence to 320 mod 592. तो यहाँ पर हमें गिवन है a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 320 एंड n इक्वल टू 592 और t इक्वल टू GCD ऑफ a एंड n which is 4 and 592. तो यहाँ पर इसका जो GCD होगा ये हो जाएगा 4. Here 4 divides 320. That implies the solution of congruence has exist. Since d equal to 4, there are 4 distinct solutions. तो यहाँ पर हमें given है 4x congruence to 320 or 592. Here GCD of A and N is 4. So by theorem 3, we can write it as x congruence to 320 divided by 4 or 592 divided by 4. By theorem 3, here 4 is considered as C. That implies x congruence to 80 or 592 divided by 4. From this, by definition of congruence modulus, we get x equal to 80 plus k into 592 divided by 4. And we know that 4 distinct solutions are x0 plus 0 into n by t, x0 plus 1 into n by t, x0 plus 2 into n by t, and x0 plus 3 into n by t. And from this equation, here 80 is x0 and n by t is 592 divided by 4. तो हमें सिर्फ k की जगह पर 0, 1, 2 and 3 पुट करना है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. x0 इक्वल टू 80 प्लस 0 into 592 divided by 4 which is equal to 80 and x1 equal to 80 plus 592 divided by 4 which is equal to 228. x2 equal to 80 plus 2 into 592 divided by 4 which is equal to 376. x3 equal to 80 plus 3 into 592 divided by 4 equal to 524. By theorem 4, we know that if x0 is the solution of linear congruence, then x0 plus k into n also the solution. That implies here 80 plus kn is 592, k into 592 is the solution of same class of congruence modulus. Similarly, we can write 228 plus k into 590 is the solution of same class. And 376 plus k into 592 is the solution of same class. And 524 plus k into 592 is the solution of same class.
आई होप मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।